Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all to learn Chinese language with Chinese language made easy. I am Muhammad Shahid and today I will discuss a dialogue from HSK3 book. This is a standard book and it is used for taking a test regarding Chinese language. So we are going to discuss some technical points in the first dialogue of HSK3 book. आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक HSK3 बुक का है और इसमें हम डिस्कस करेंगे पहला डायलॉग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है लेकिन ये फ़ायदा दे सकता है उन लोगों को जो नए नए चाइनीज़ ज़बान सीखने वाले हैं, या उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो ये टेस्ट जो है वो देना चाहते हैं या वैसे ही चाइनीज़ ज़बान बोलना चाहते हैं। और तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो डिस्कस करते हैं इसमें, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल भी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टू नो अबाउट दिस डायलॉग। द डायलॉग राइट हियर इज in front of you we have two characters who are involved in this dialogue. The first one is Shaoli. Shaoli is a female, and the second one is Xiaogang is a male. So let's just get to know that what does Shaoli want to tell Xiaogang. Okay, so Shaoli says that 周末你有什么打算？周末你有什么打算？周末你有什么打算？周末 means weekend. 你有 means you have. 什么 what? 打算 plan. So what is your plan for the weekend, or what's your plan for the weekend? Shaoli is asking Xiaogang that what is his plan for the weekend. शाओली, दो लोग इस डायलॉग में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला जो है वो है शाओली जो है वो एक फीमेल है, एक औरत है, और शाओकांग जो है वो एक मेल है, मर्द है। शाओली पूछ रही है शाओकांग से कि इस वीकेंड पर, वीकेंड हफ्ते और इतवार को कहते हैं, बाहर के ममालिक में ये दिन छुट्टी के दिन होते हैं, तो लोग जो है वो आराम करते हैं या ज़्यादातर उनका प्लान होता है अपनों के साथ ये वक्त गुजारने का। तो वो प्लान पूछ रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ या रिलेटिव्स के साथ। सो 周末你有什么打算? Shaoli is asking Xiaogang that what is his plan for the weekend. Okay, 周末कहते हैं वीकेंड को, हफ्ते और इतवार का दिन अमूमन ये शुमार होते हैं, वीकेंड को कहते हैं। 你有 तुम्हारा, है 什么 क्या, 打算 इरादा या प्लान या मंसूबा, तुम्हारा क्या मंसूबा है या क्या इरादा है, हफ्ते और इतवार के दिन क्या करने वाले हो, शाओकांग से कह रही है। तो शाओकांग replies to her is that 我早就想好了，我早就想好了，我早就想好了，请你吃饭，请你吃饭，看电影，喝咖啡，我早就想好了。我爱早 earlier, 就 is I explained this this particle, this word over here. Later you will get to know the use of this word later in this lecture. So just focus on the other words right now. 我早就想好了。想, one meaning of 想 is to want something, but one meaning of 想 in Chinese sentences is to think. And I have also explained this is also a technical point in this dialogue. 想好, when a verb is used with 好, then what is the use and what is the meaning of this? So I have also explained it later, but right now you just know about the meaning of this. 我早就想好了, I have already thought about it. 请你吃饭，请你吃饭, that I should invite you, that I should invite you, or I invite you on a meal. And not only that, what are we going to do?
along with that, 看电影 to watch a movie. We are going to watch a movie too. 喝咖啡 and we are going to drink coffee. So शाओली शाओगांग से कह रही है कि क्या कर रहे हो तुम, तो क्या इरादा है तुम्हारा। तो शाओगांग उसे कहता है कि 我早就想好了, मैंने पहले से ही सोच रखा है। 请你吃饭 कि तुम्हें दावत दो, खाने पर बुलाऊं। और ये सिर्फ ही नहीं कि हम खाना खाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, 看电影 We are going to watch a movie, हम एक फिल्म भी देखेंगे, इसके साथ साथ हम喝काफे और कॉफी भी पिएंगे। So this is the meaning of this dialogue. We are going to explain those technical points in front of you. The first one was this one is very important, 想好, and after that we are going to discuss this. So let's proceed. Okay. When a verb is used with 好, it means when 好 follows a verb, it indicates the completion of some task satisfactorily. इत्मीनान के साथ एक काम खत्म हो रहा है, तसल्ली बख्श काम हो चुका है, तो उसके बारे में इंडिकेशन देता है। ये हमें उसकी तरफ इशारा करता है कि ये काम खत्म हो चुका है तसल्ली के साथ। So 想好 想 is a verb and it is used with 好 is a complement. So in the dialogue it means the completion of a thought. Like Shaogang is saying that 我早就想好了. He says that I already thought about calling you out on a meal, and we are going to watch a movie, and we are going to have coffee. So this is the total, in a nutshell. I would say that 想好 means that the thought has been completed. Okay, he has already thought about this, that he is planning to go without Shaoli. Shaogang is planning to go out with Shaoli. So इसमें मैंने ये बताया कि श्यांग जो कि एक वर्ब है, जब ये एक वर्ब जब आ जाता है पहले और उसके बाद खाओ आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो काम जो है वो पाए तकमील तक पहुंच चुका है तसल्ली के साथ, ये उसका मतलब होता है। और डायलॉग में श्यांग खाओ का मतलब है कि वो पहले से ही सोच चुका है कि उसने शाओली को ले जाना है खाने पर, दावत उसने देनी है उसको, उसके बाद वो फिल्म देखेंगे, उसके बाद कॉफी पिएंगे। सो दिस वाज द होल समरी ऑफ श्यांग खाओ, which might not be very clear to those who are reading the book for the first time. As I was reading it for the first time, for me it was difficult, so I'm just explaining these points to you. Also on the same point, using how as a complement, the HSK3 book contain a lot of sentences. You can find it out, different verbs along with how, and you will see the result of the task that has been completed. So proceeding ahead, I have told you that there is another particle, another word, 就. This word has different uses in Mandarin, but here it could be replaced by, and you are going to see it in the next dialogue that is coming after this, is 已经. 已经 means already. So we have said 我早就想好了. So 我早 I earlier, 就 already, 想好了 thought. So you can replace the 就 particle with 已经 or 确定 certainly, यकीनन. पहले से ही, 已经 कहते हैं पहले से ही, या 确定 means certainly, यकीनन. मैंने यकीनन सोच रखा है या सोच रखा था, या मैं पहले से ही सोच चुका हूँ कि मैंने तुम्हें खाने पर बाहर ले जाना है. सो ये जो था उसका पॉइंट, जो टेक्निकलिटी थी उसकी, वो ये है. बाकी इसके और भी इस्तेमाल है, चाइनीज़ ज़ुबान में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल आप इतना सीख लें कि ये जो है ये हम तब्दील कर सकते हैं इन अल्फाज के साथ,
मैं पहले से ही सोच चुका हूँ या सोच चुका था या मेरा ये इरादा है या ये मेरा इरादा था कि मैं तुम्हें इस वीकेंड पर ले जाऊँ खाने के लिए और फिल्म दिखाऊँ और काफ़ी जो है वो पिलाऊँ. So this is about Joe. Now this is the second part of the dialogue. Shaoli is saying 请我请我请我请我. Okay, inviting me. I have also explained this. This is in a very short form. She is saying that, are you inviting me? Are you planning to invite me? This could be the whole sentence, which I have discussed later. मैंने बाद में इसको तफसील से बयान किया है कि छिंगवा का मतलब क्या है. यहाँ पर तो हमें हो सकता है कि लगे कि छिंगवा का मतलब है कि प्लीज मैं, तो ये कोई सेंस नहीं बनता उसका. छिंगवा का मतलब है कि क्या तुम मुझे खाने पर बुलाने का इरादा रखते हो. लाइक वो हैरत में जो है वो हैरत में है. शी माइट बी सरप्राइज्ड बाय व्हाट Xiaogang just said to her, that he has planned to call her out on a meal and they should have, all the other activities along with that. So she might be surprised. That is why she is saying that Qingwo, you inviting me, and we are going to see the whole scenario, the whole sentence also after this. Shaoli ye keh rahi hai usse. Xiaogang says, 是啊，是啊，我已经找好饭馆了，我已经找好饭馆了，电影票也买好了。Now he's saying that, 是啊, yes, 我已经, I have told you that. If you see, here we also used 找, which means to find, and 好 is the complement used with the 找. I have explained this too later, but right now you just see this again. Okay, so he's saying that 我已经找好饭馆了，找好饭馆了. I have already found the restaurant, 电影票也买好了, and I have also bought the tickets for the movie which we are going to watch. So he is saying that thing to her, that जी हाँ, जी हाँ, 我已经找好饭馆了. मैंने तो होटल भी, रेस्टोरेंट भी देख लिया है जहाँ पर हमने खाना खाना है. खाना खाने की जगह मैंने देख ली है, पहले से ही मालूम कर ली है. 电影票也买好了, 电影票也买好了. मैंने मूवी की, जो फिल्म हम देखने जा रहे हैं, उसकी तो मैंने टिकटें भी खरीद ली है. तो उसने पहले से ही सारा मंसूबा बना लिया है, तो इसीलिए वो यहाँ पर ईचिंग का इस्तेमाल कर रहा है. वो ईचिंग चाओ हाउ फान क्वान ला, मैंने पहले से ही रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है, खाने की जगह ढूंढ ली है. दियनिंग प्याओ ये मा हावला, और मैंने मूवी का टिकट भी खरीद लिया है. सो यहाँ पे इफ यू सी अनदर same structure used here, my means to buy, and we used along with this verb the complement how, and again this is indicating the completion of the task of buying the ticket of the movie, and here the task of finding the restaurant has been completed. So you are going to see it later as we proceed ahead. Now I have told you about the 请我 full form could be 你打算请我吃饭吗? 你打算请我吃饭吗? Are you planning to invite me on the meal? Shaoli is saying that, as I told you, कि क्या तुम मुझे दावत दे रहे हो, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, 请我, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, इरादा रखते हो मुझे बुलाने का खाने पर या दावत देने का. तो यहाँ पर ये वो कंप्लीट सेंटेंस हम इस तरह कह सकते हैं, और 请我 सिर्फ यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है. I have highlighted this one, and the rest of the part of the sentence could be like this. 你打算请我吃饭吗? Are you planning to invite me on the meal? क्या तुम मुझे शायद वो हैरत का इजहार कर रही है. She is surprised, so that is why she is saying 请我. Are you inviting me? Are you planning to invite me? And in answering this question, Xiaogang said that yes, he has planned everything which we have discussed before.
This one I have told you in the dialogue that Zhao means to find, and it is used with how. How is used after Zhao, and it indicates the completion of some task, and the task is finding a restaurant, and this task has been completed. He has already found the restaurant where they are going to eat. जहाँ पर उन्होंने खाना खाना है उस रेस्टोरेंट को उन्होंने ढूंढ लिया है. Another thing that we have seen in this dialogue, that was my how. So how is again used as a complement with my, and here the task of Piao my how la is the task of buying movie tickets has been completed. So यहाँ पे फिल्म की tickets भी खरीदी जा चुकी है. That is why my is, which is a verb, and that is used with how. So the task has been completed of buying the tickets of the movie. Okay, and the dialogue ends here, where Shaoli wants to say something to Xiaogang. 我还没想要不要跟你去呢，我还没想要不要跟你去呢，我还没想要不要跟你去呢，我还没 I still did not 想要不要 I still did not think, or I still did not think about this 要不要 that I want or not want 跟你去呢 to go out on the meal with you and to watch the movie and to have coffee with you. I haven't thought about it yet. We have discussed this. If you are a beginner to Chinese language, you might have seen this particle frequently when we used to say that 你怎么样 how are you, and the other person replied that 我很好 I am fine, 你呢 and you. But right here, this particle, this is a model particle. One of the use of this particle over here is that it is making the sentence soft, to make it feel like it is a softer way of saying this sentence. That she is saying that 我还没想要不要跟你去呢 I still did not think about that whether I'm going with you or not. Okay, so this is the whole thing that I have discussed. And also, to enforce some assertion in a sentence, this model particle is used at the end of a sentence. So she is saying that she has not decided this yet, that whether she is planning to go out with Xiaogang or not. So gun means with, ni here, ni means Xiaogang, Chuna to go with. So Shaoli is saying that 我还没想要不要跟你去呢 she hasn't decided it yet or thought it yet that whether she is going out with him or not for the activities that he has planned for her. इसमें शाओली बता रही है कि मैंने अभी तक ये नहीं सोचा है इसके बारे में अभी तक. 我还 I still 没想 did not think 要不要 that I want or not 跟你去呢 with you to go out, that मैंने अभी तक ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ. So this is the end of the dialogue, and I hope that you would have learned something in this dialogue which you might have not heard or listened before. So if you learned something new in this dialogue and you like the way with which I try to explain this dialogue and all the lectures that I try to deliver on this channel, so don't forget to subscribe and stay tuned, and we're going to see each other in next video, an interesting video lecture about any Chinese topic. That could be HSK3, that could be any general topic, that could be writing practices, and a lot of new information about Chinese language. अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको चैनल की वीडियोस पसंद आती है, आपको समझाने का तरीका पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने में हिचकिचाए बिल्कुल भी नहीं. और हम इंशाल्लाह नए मजीद अच्छे दिलचस्प टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़, ज़ाइजियन.